A very good morning to all of you, my dear students. How are you? Students, I hope that you all are fine. So, students, today, as you know, that we have already studied most of the things in adjectives. But one thing which is very important with respect to adjectives is the order of adjectives. Means, if in a sentence there are more than two adjectives are used, if in any sentences there are more than two adjectives are used, then the question arises, which adjective should come first and which adjective should come second. Means we should understand the sequence to write the adjectives. So I will start teaching this with the help of example. So here, if you check question number C, here it says rewrite these sentences using the correct order of adjectives. So students, here in question number 1, Rita spotted large 6 brown birds while returning from school. So if I ask from you that please underline the adjectives, so you will say that, sir, Rita is a noun, spotted is a verb, large is adjective, 6 is adjective, brown is adjective. So there are three adjectives which are qualifying the noun birds. As much like as we know about the adjectives, that these are the words that qualify, that modify a noun or a pronoun. So here birds is a noun, and these three words, large, 6 and brown, are the adjectives that qualify birds. So the sentence goes like this: Rita spotted large 6 brown birds while returning from school. So students, as I said, the sequence of the adjectives does matter. So if I ask you that what is large, large is actually a size, because something is large or small, so we call it that its size is large or its size is small. So large is actually a kind of size, isn't it or not? Okay. 6 is adjective of number. Tell me. 6 is adjective of number. 6 is adjective of number. And brown is adjective of quality. Brown is adjective of quality. Moreover, it is adjective of color as well. Means in the quality, it is a kind of a color. So now when we check the sequence, this is the most important part of your grammar of this chapter adjective, and I would request you to prepare a chart. Okay, and if not a chart, then prepare this flow chart on a A4 sheet. Okay, एक जो A4 शीट होती है जिस पे आपके पेपर्स प्रिंट होते हैं, उस A4 शीट पे एक अच्छा सा मतलब डेकोरेट करके ये चार्ट आप बनाओ और मुझे इसे भेजो. ठीक है? इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो, बट प्लीज़ सेंड इट. क्लियर? बिकॉज A4 शीट सबके घर पे होगी, और अगर नहीं है तो गो टू द मार्केट, बाय इट एंड प्रिपेयर एंड सेंड इट टू मी. ओके? Those who have the chart paper, or those who are interested for drawing it on chart paper, they are most welcome. But both things are available. आप अगर चाहो तो chart paper भी बना सकते हो, और आप चाहो तो A4 sheet पे भी बना सकते हो. So here the sequence goes like this. Whenever you find multiple adjectives in a sentence, so the sequence will be number. The number can be 1, 15, 3, 5, 19, anyone. Then comes the opinion. So if I talk about the opinion can be ugly, smooth,
So the opinion of a person for something, the opinion of a person for something, for example, this uh, his sorry her handwriting is ugly. So whether the handwriting is ugly or not, it actually varies from person to person on their opinion. So for someone, this handwriting can be very beautiful, and for some, the handwriting can be very ugly. Isn't it or not, students? Try to understand my point. Like, for example, for me, your handwriting is very beautiful, but for your guardian or for your uncle, the handwriting can be ugly. So it's a kind of opinion from various persons. So that's why after number, the second thing that comes is opinion. Now the next is size. So if I talk about the size, size can be large, size can be small, size can be medium, size can be huge, size can be minute. Read it as minute, it's not minute. The spelling of minute and minute is same, minute, but it has two different meanings. First meaning, when you pronunciate it as when you pronounce it as minute, it means small. When you pronounce it as minute, it means small. And when you pronounce it as minute, it means a unit of time. A unit of time. A unit of time. Clear? Now the next is age. Age means adolescent, aged, and various categories. So the sequence goes like this: number, then opinion, then size, then age, and after age, then comes the purpose: domestic or sports. For example, if you buy something for domestic purpose, if you buy something for domestic purpose, so we domestic means घर के use के लिए, so we call it domestics. If you buy something for sports purpose, we call it the purpose is sports. And if you get confused here, so don't worry, because there are many examples. So with the help of those examples, you will be in a comfort zone. Now talking about the material is something like jute, woolen, cotton. So after purpose, then comes the material. Gold, yes, gold can also be a material. Okay, because if someone has bought a jewelry, a gold jewelry, a gold, so there has to be the kind of material. And if there is a material, it's an adjective, and if it's an adjective, we must know where it should be placed. Then comes the origin or nationality: Italian, American, British, Indian. So there are, like, if that product is from a particular origin, so we have to mention the origin as well. And when does this origin comes? At the seventh position, because this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7. And after origin, then comes the color. If there is any product, so that color of the product comes at the eighth position. Okay, at the eighth position. So if I ask you to memorize, so you must distinguish that the size comes before and color comes later. And the last is shape, because the shape of various products are specific, and uh, we have to mention it. Such as, if I say that the shape of her study table is rectangular, the shape of her study table is rectangular, so here the shape does matter. Like, if you are mentioning, or he has bought a rectangular study table,
Let's write it for you. He has bought a rectangular study table. So here study table is actually, if I say that table is a noun, and if I talk about the study, so study is actually the kind of work which is there, like this. The specification of the table is that it's a study table, and moreover, one of the qualities and one of the adjective of this study table is that it's a rectangular one. For example, if someone has bought a wristwatch, so this person has bought a triangular shaped wristwatch. A triangular shaped wristwatch. हालांकि triangular shape का wristwatch होता नहीं, but let's say for design someone has made it. So I hope that now you are pretty much aware of the kind of sequence that adjectives do follow. Okay, so now if you are able to understand this, let me answer one of the questions from here. So here, as I said that birds is a noun, and there are three adjectives used: large, six, and brown. So large is a size. Large is a size. Six is a number, and brown is a color. And brown is a color. So if I talk about the size, number, and color, here you see the pattern: size, number, and color. Size, number, and color. So if I talk about the sequence out of these three adjectives, so this comes first, this comes second, and this comes third. Number comes first, then size, then color. So if I move further, the first one is number. The first one is number. The second is size, and the third is color. Third is color. So the correct sequence of the adjectives or order of adjectives will be, for this sentence, will be: Rita spotted six large brown birds. Clear? And rest of the sentence will be the same as it is while returning from school. So students, if you are right now able to understand part 1, so I believe that right now you can do rest of the parts as well. So try to answer it, and if you face any problem, do send your doubts. Okay, now the next is formation of adjectives. So students, the adjectives are actually formed from these three things: nouns, verbs, and adjectives. मीन्स कि एक एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, नाउन से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है कुछ सफिक्स ऐड करके. सिमिलरली वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है कुछ सफिक्स ऐड करके. सो here are the rules of formation, एंड अगेन उसी A4 शीट पे आपको ये रूल्स ऑफ फॉर्मेशन भी नोट करना है. ठीक है, अगर क्या बेसिकली यू नीड राइट नाउ यू नीड 2 A4 शीट्स. ठीक है ना, बिकॉज ये सब बेटा रूल है, and these rules are very helpful till you read English, not only up to class 7th or 8th or 9th or 10th or 11th or 12th, but आप जब कभी भी इंग्लिश पढ़ोगे, even if you are right now at the age of 13 or 12 years, so अगर आप 40 to 45 years के भी हो, and if you are teaching and if you are studying, so after 30-35 years from now you again will need these things. So once you prepare this chart or this on an A4 sheet, so this will be completely printed on your mind.
the rules and the procedures. So when we want to make an adjective from a noun, what do? We add suffixes, and suffixes like ous, ic, able, ful, al, and y. And the examples are: honor is a noun. Honor is a noun. But when we add able after honor, it becomes honorable. And here it becomes an adjective. And here and becomes an adjective. So students, here that's a hint that in any word, if that word is ending with able, if that word is ending with able or ful or less or ish or fold, so that's a hint that those words are adjective. ये एक हिंट है कि ये के सारे वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे. तो नाउन से अगर जाना है मैं एडजेक्टिव पे, तो हम लोग एबल और ये सारे वर्ड्स को एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे. अच्छा, अगर वर्ब से हम लोगों को एडजेक्टिव पे जाना है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल देन व्हाट विल वी डू, तो हम लोग वर्ब में एफ यू एल, एबल, इबल, लेस ये सब लगा देंगे. ठीक है ना. जैसे कि चेयर एक हमारा वर्ब होता है, जैसे ना. अच्छा, ये चीज़ और समझो, बड़ा इजी सा चीज़ है. माई स्टूडेंट्स are often confused. Not only my students, but anyone who reads English from the basic is always confused among some of the parts of speech. किसी को वर्ब समझ में नहीं आता, वर्ब पहचान में नहीं आता है, किसी को एडजेक्टिव पहचान में नहीं आता है, किसी को एडवर्ब पहचान में नहीं आता है. ठीक है. तो बेटा देखो, वर्ब और एडजेक्टिव की एक बहुत बड़ी खासियत होती है. वर्ब अगर कोई है, कोई भी वर्ड अगर वर्ब है, तो उसका आईएनजी फॉर्म तो ज़रूर होगा ना. आईएनजी फॉर्म मीन्स, जैसे अगर मैंने कहा ईट, ईट इज़ अ वर्ब, सो ईट का आईएनजी फॉर्म होगा ईटिंग, होगा ना. जैसे मैंने बोला प्ले, तो प्ले का एक आईएनजी फॉर्म होगा प्लेइंग. मैंने बोला स्लीप, तो स्लीप का एक आईएनजी फॉर्म होगा स्लीपिंग. उसी तरीके से एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, तो एडजेक्टिव की क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या स्पेशलिटी होती है कि एडजेक्टिव हैज़ अ डिग्री. ओके, सो इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, इट कैन बी कॉम्परेटिव डिग्री, इट कैन बी अ सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एडजेक्टिव की बात करूँ ब्यूटीफुल, तो बच्चों आप ब्यूटीफुल का कभी भी ब्यूटीफुलिंग नहीं पढ़े होगे या ब्यूटीफुल्ड नहीं पढ़े होगे, कभी भी नहीं. इट हैज़ नेवर एवर क्रॉस थ्रू योर आइज़ कि आप ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्ड पढ़े हो या ब्यूटीफुलिंग पढ़े हो. ब्यूटीफुल का आपने मोर ब्यूटीफुल पढ़ा है और मोस्ट ब्यूटीफुल पढ़ा है. सो कोई ऐसा वर्ड, या फिर अगर हम बात करें लेट्स से कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग इज़ एन एडजेक्टिव. तो स्ट्रॉन्ग, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है. तो बच्चा ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग का तुमने कभी आईएनजी फॉर्म देखा, स्ट्रॉन्गिंग, बोलो, कभी नहीं देखा. या स्ट्रॉन्ग्ड, तो अगर कभी भी आपने किसी ऐसे वर्ड का आईएनजी फॉर्म देखा नहीं है, इट मीन्स कि इट्स नॉट अ वर्ब. अच्छा, स्ट्रॉन्ग के साथ आपने स्ट्रॉन्गर देखा और स्ट्रॉन्गेस्ट देखा है. जैसे अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, सो दे से दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास. सो हेयर अगर वो एडजेक्टिव है तो इसका डिग्री पॉसिबल होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री भी बनता होगा जैसे स्ट्रॉन्गर, या फिर सुपरलेटिव डिग्री भी बनता होगा जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है. अच्छा, जो वर्ब नहीं है, क्योंकि अब आप वर्ब को पहचानना जान गए, अब आप एडजेक्टिव को पहचानना जान गए, तो कोई चीज़ अगर वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो कन्फ्यूज़न आपको किन तीन में रहता है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. सो स्टूडेंट्स, इफ देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ नॉट अ वर्ब, एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं है, तो रह दे के बचा क्या, वो एडवर्ब ही तो बचा ना. मैं कहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, तो बच्चा वो नाउन से शुरू होता है. नाउन की जगह पे जो यूज़ हुआ वो प्रोनाउन है. जो एक्शन वर्ड होता है उसको वर्ब कहते हैं. जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. जो नाउन जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आता है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है, जो दो
पार्ट्स को जोड़ता है, जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है जो कि सेंटेंस के दो हिस्सों को या दो नाउन को या दो प्रोनाउन के बीच में या फिर दो एक्शन के बीच में कोई रिलेशन बताता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में भी स्टूडेंट्स आर सो मच कंफ्यूज्ड। सो कंजंक्शन मीन्स कनेक्ट करता है और प्रीपोजिशन मीन्स रिलेशन बताता है। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो इन्हीं तीनों में आती है। मतलब बेसिकली दिक्कत तो इन 5 में आती है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन का जो रेंज होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का एक साथ होता है। यानी जो भी गिवन वर्ड आप उस वर्ड को आइडेंटिफाई करके इन्हीं तीनों में कन्फ्यूज रहोगे। और सेकेंड जो कन्फ्यूजन होता है वो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में होता है। सो इसके लिए भी आई विल टीच यू द कंसेप्ट दैट हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर देयर इज प्रीपोजिशन एंड वेयर देयर इज कंजंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम अ नाउन, फ्रॉम अ वर्ब और फ्रॉम अ एडजेक्टिव इटसेल्फ। अच्छा, एडजेक्टिव्स इटसेल्फ का भी ज़रा सा देख लो क्या है। पहले से मैं चीयर पे था ना, हाँ, तो चीयर का देखो क्या है। चीयर का चीयरिंग होता है, चीयर का चीयर्ड होता है, यानी ये वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ का क्वेश्चन आता है सर टेस्टिंग, टेस्ट का टेस्टिंग तो नहीं पढ़ा मैंने कभी। बच्चों टेस्ट का टेस्टिंग इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। आपको कहोगे सर वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है, ये बहुत थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ हो गई, ये आप लोग 9-10 के ग्रामर में पढ़ोगे, बट आज जब ज़बान पे आ गया तो देख ही लो। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है? जो कि आप इमीडिएट कोई चीज़ को देखते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप कुछ देख रहे हो तो आप सी बोलते हो, राइट। आई एम सीइंग नहीं बोलते हो, आई सी इट। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन का आईएनजी फॉर्म कहीं कहीं बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता है। अच्छा, अब मैं बात करूँ टेस्ट का, तो देखो टेस्ट क्या है कि इट्स अ इमीडिएट एक्शन, इट्स एन इमीडिएट एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ बहुत डिलीशियस सा कोई फूड बन के रखा हुआ है एंड यू हैव टू टेस्ट इट। सो डज दिस प्रोसेस टेक्स टाइम? किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में क्या ये टाइम टेकिंग होता है? देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन एंड अ नॉर्मल वर्ब। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग, तो देखो स्टडी का स्टडिंग होता है, क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ वर्ब जो कि एक ज़ीरो टाइम में नहीं हो सकता। हम कहते हैं अगर कोई स्टडी कर रहा है तो कैन यू स्टडी फॉर अ सेकेंड? या दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। कैन यू स्टडी फॉर अ सेकेंड? कैन यू स्टडी फॉर 2 सेकेंड? नहीं। बट कैन यू टेस्ट समथिंग फॉर अ सेकेंड? तो बच्चों टेस्ट करने में कितना देर लगता है किसी चीज़ को? फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कप ऑफ टी एंड योर मदर आस्क कि बेटा इसको टेस्ट करके बताओ कि इसमें शुगर है या नहीं है। सो यू कैन चेक इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो इन द सेम वे वेयर देयर आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, these verbs doesn't take much time to get complete. These are momentary. So अब मैं टेस्ट की मैं बात वापस करता हूँ। तो जो टेस्ट है, वी नेवर सी कि टेस्ट का टेस्टिंग होता है, लेकिन टेस्ट का टेस्टेड तो होता है ना, है ना। जैसे कि यू से कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स मॉम हैज़ कुक्ड अ पिज़्ज़ा and I tasted it right at his house, right at his home. तो टेस्ट का टेस्टेड तो बना, इट मीन्स इट्स अ नाउन, एंड इफ इट्स अ नाउन तो टेस्ट के साथ फिर आप लेस या कुछ लगा सकते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, टेस्ट लेस। सिमिलर एडजेक्टिव के साथ होता है, सिमिलर आपका एडजेक्टिव के साथ होता है। जैसे मैंने अभी आपको देखा, जैसे मैंने कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो रेड और रेडिश क्या है, ठीक है ना। तो इसी का देख लेते हैं। रेड इज़ ए कलर एंड इट्स एन एडजेक्टिव एज वेल, अभी जस्ट हमने सीखा। तो अगर इस रेड के आगे
हमने एक और डी डी आई एस एच लगा दिया, तो ये अब एडजेक्टिव हो गया, ये अब एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना? चलो, सो हियर इज़ योर होमवर्क। होमवर्क है, मैंने वो चार्ट वाला तो समझा ही दिया है, पार्ट सी का सारा कंप्लीट करोगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? एंड पार्ट डी में भी करोगे, एडजेक्टिव फॉर्म करना है। पार्ट ई में क्या करना है कि एडजेक्टिव फॉर्म करने के बाद उसे सेंटेंस में यूज़ भी करना है। तो ट्राई इट आउट, नहीं होता है तो आई विल टीच। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर ई के 5 तक करना है आपको। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दिस कंपाउंड एडजेक्टिव्स। एंड अभी तक की क्लास का कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क योर डाउट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।